Well, Bhagat Singh was born in 1907 and gave his life for India, and nation marks 113th birth anniversary of Bhagat Singh ji, and the slogan Inqilab Zindabad was coined by Bhagat Singh. That's our big story today. I'm Idris. Bhagat Singh's name is synonymous with the revolutionary movement that contributed to India's freedom struggle. Celebrated for his gusto and courage to stand up to British rule, Bhagat Singh was born in 1907 and gave his life for the country when he was sentenced to death by execution at the ripe age of 23, along with his associates Rajguru and Sukhdev on the charges of assassinating British police officer John Saunders, who had ordered brutal police action on independence movement leader Lala Lajpat Rai. On the occasion of 113th birth anniversary of revolutionary leader, here are some lesser known facts about Shaheed Bhagat Singh, who continues to be an inspiration even times today. Here are some interesting quotes on the screen. Well, in college, he was a great actor and participated in several plays, including Rana Pratap and Bharat Durdasha. It was said that Bhagat Singh in his childhood always spoke about guns. He also wanted to grow guns in the fields to fight the British. When Bhagat Singh's parents wanted him to marry, he ran away to Kanpur. He told his parents, if I will marry in colonial India, where British Raj is there my bride will be death. Therefore, there is no rest or worldly desire that can lure me now. देशवासियों, मैं आपको अतीत के एक हिस्से में ले जाना चाहता हूं। 101 साल पुरानी बात है। 1919 का साल था। अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था। इस नरसंहार के बाद एक 12 साल का लड़का उस घटना स्थल पर गया। वह खुशमिजाज और चंचल बालक, लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था। वह स्तब्ध था, यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वह मासूम गुस्से की आग में जलने लगा था। उसी जलियांवाला बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। क्या आपको पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूं। कल 28 सितंबर को हम शहीद वीर भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने
ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। शहीद वीर भगत सिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते थे। लाला लाजपत राय के प्रति उनका समर्पण हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु समेत कई क्रांतिकारियों के साथ उनका जुड़ाव, उनके लिए कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा। वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। मैंने नमो ऐप पर हैदराबाद के अजय एस जी का एक कमेंट पढ़ा। अजय जी लिखते हैं, आज के युवा कैसे भगत सिंह जैसे बन सकते हैं। देखिए, हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो। शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। 4 साल पहले लगभग यही समय था जब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दुनिया ने हमारे जवानों के साहस, शौर्य और निर्भीकता को देखा था। हमारे बहादुर सैनिकों का एक ही मकसद और एक ही लक्ष्य था, हर कीमत पर भारत माँ के गौरव और सम्मान की रक्षा करना। उन्होंने अपनी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं की। वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए और हम सब ने देखा कि किस प्रकार वे विजयी होकर के सामने आए। मेरे प्यारे देशवासियों, Bhagat Singh had fasted for 116 days in jail. Even during this time, he completed all his daily work, which included reading and writing books, visiting court every day, and even singing the patriot slogan "Inqilab Zindabad," which later became the freedom movement's calling, was coined by Bhagat Singh. आज यहाँ हमारा कुछा महासिंह में शहीद आजम भगत सिंह जी की 113वीं जन्मदिन शताब्दी के ऊपर आज हमारे वार्ड कमेटी कांग्रेस की 1 नंबर वार्ड की, जिसके अध्यक्ष राम अंगोत्रा जी और उनकी टीम और ब्लॉक कमेटी और जो हमारे इंचार्ज हैं यहाँ जम्मू ईस्ट के पवन सिंह जी और बाकी उनकी पूरी टीम, आज उन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा था शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि वे जो हमारी नई जनरेशन उसमें चेतना लाने के लिए कि ऐसी शख्सियत जिसने 23 साल की उम्र में भारत की आजादी में हिस्सा लेते हुए उस बरतानवी सरकार का लोहा लेते हुए 23 साल की उम्र में अपनी शहादत दी, और हमारी लोगों के बीच में ये मैसेज देने का मकसद था कि इन लोगों को उनके जन्मदिन पर, उनकी शहादत पर भूलना नहीं चाहिए, उनको हमेशा याद किया जाए और आने वाली जनरेशन को उनके द्वारा किए हुए कार्य, भारत की आजादी में इनका क्या योगदान रहा, ये हमारी जनरेशन को, हमारे बच्चों को बताना। Police believe that when his mother had come to visit him in jail, Bhagat Singh was laughing loudly. Seeing this, jail authorities were shocked, considering he was so close to death. He was hanged an hour ahead of the official time on March 23, 1931. It is said that Bhagat Singh was smiling at the time of hanging. Bhagat Singh was born on this day in 1907, that's 28th September, in a village called Banga, now in Pakistan. The village, like it does every day, is planning to celebrate his birthday with pride. Bhagat Singh's birth turned this remote, dusty village into a place of pilgrimage. It has been declared as a national heritage site by Pakistani government.
Bhagat Singh evokes respect among many across the border despite the two countries' bitter relationship. Because he always vouched for human dignity and rights beyond sectarian divide, he castigated all those who floundered on these basic values, as is evident from the fairly huge corpus of writing he bequeathed to us. How was a young man who did not live beyond his early 20s able to think and write so profoundly about the complex social, philosophical, economic and political issues? One simple answer to this is that he was a voracious reader. He read anything that helped him to unravel the complexities of life from both prose and poetry. Well, all his comrades reported in their memoirs that they never saw Bhagat Singh without a book in his hand and a few his pockets. Even his mother reprimanded him for pushing books into his jacket pockets, which were mostly torn. He was also passionate about some meaningful as well as romantic films. He learned a lot from the plays he participated in as a young man. Well, one talks about Bhagat Singh as thinking individual and not as raw nationalist. It does not mean that what a scholar in his teens. It emphasizes his exposure to world literature through intense reading in his short life. It is also an attempt to wean him away from the image of a trigger-happy young man. This image was deliberately publicized by the colonial government, which many of us internationalized and continue to do, romanticize every day. We know he had a very short life, most of which was spent under surveillance of the colonial government, yet could pressure his passion for reading and writing relentlessly.
Well, not much was known about him in 1930s except for his martyrdom. Most of Bhagat Singh's commendable traits were unraveled by family friends and researchers many decades later. His extraordinary hunger for reading was properly documented when he was arrested and imprisoned after the assembly bomb explosion. However, Ajoy Ghosh on his associates wrote about his first impression of him in 1923 when he found him shabbily clad and a simple village lad lacking smartness and self-confidence. Within 5 years, in 1928, he was transformed, and when he asked about the change, he responded with one word: study. In his own words, study was the cry that reverberated in the corridors of my mind. Study to enable yourself to face the arguments advanced by opposition. Study to arm yourself with argument in favor of your cult. Well, before the assembly bomb explosion in April 1929, the revolutionaries stayed at Agra for some time and set up a small office at Hing Ki Mandi. Bhagat Singh soon established a small library comprising 175 books by around 70 authors, most of them collected from his friends and supporters. Though small, the library was rich in literature, mainly comprising books on economics. There were also books on the trade union movements, explosives and bomb making, and very few about the Russian revolutionaries. These books are still lying in a state of neglect at Malkhana Record in Lower Trial Court of Lahore. Bhagat Singh's intellectual life really began after his arrest. He was already an avid reader. Shiva Verma, one of his comrades in jail, wrote about Singh's love for books. Thus, we had easy access to books in jail since the day one, and the atmosphere was quiet, congenial for study and exchange of ideas. But Bhagat Singh's arrival made this much more lively.
Though we had all a passion for reading, but Bhagat Singh was a class by himself. Despite his soft corner for socialism, he was passionate about fiction as well, particularly with political and economical themes. Dickens, Upton Sinclair, Hall Caine, Victor Hugo, Gorky and Oscar Wilde were among his favorites. While in prison, Bhagat Singh and his comrades went on a long hunger strike, raising several demands of the political prisoners. Two of the demands are relevant here. All books except those proscribed with writing materials should be made available without restrictions. At least one daily paper should be supplied to each political prisoner. Bhagat Singh was almost certain that he would be executed, yet he wanted to read as much as he could and wanted his comrades to read as well. He could leave behind a huge corpus of writing legacy only because his choice of reading material was diverse. साथियों, मैं आपको अतीत के एक हिस्से में ले जाना चाहता हूँ। 101 साल पुरानी बात है। 1919 का साल था। अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था। इस नरसंहार के बाद एक 12 साल का लड़का उस घटना स्थल पर गया। वह खुशमिजाज और चंचल बालक, लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था। वह स्तब्ध था, यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वह मासूम गुस्से की आग में जलने लगा था। उसी जलियांवाला बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। क्या आपको पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। कल 28 सितंबर को हम शहीद वीर भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। शहीद वीर भगत सिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते थे। लाला लाजपत राय के प्रति उनका समर्पण हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु समेत कई क्रांतिकारियों के साथ उनका जुड़ाव, उनके लिए कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा। वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। वह मिशन था भारत को अन्याय
और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। मैंने नमो ऐप पर हैदराबाद के अजय एस जी का एक कमेंट पढ़ा। अजय जी लिखते हैं, आज के युवा कैसे भगत सिंह जैसे बन सकते हैं। देखिए, हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो। शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। 4 साल पहले लगभग यही समय था जब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दुनिया ने हमारे जवानों के साहस, शौर्य और निर्भीकता को देखा था। How did he manage to get all the literature, most of which was suspect in the eyes of colonial administration? There were two main resources for books. One for them was the Dwarka Das Library, established by Lala Lajpat Rai in Lahore, and other was a bookshop called Ramakrishna and Sons. Both of them were the main suppliers of Marxist and revolutionary literature. Rajaram Shastri, the young socialist librarian of library, once told Shiv Verma that Bhagat Singh did not just read books, he almost devoured them, yet his yearnings to seek knowledge always remained unsatiated. Well, that was our big story today. Thank you for watching. More news and updates continue on CVR English.